Today we will see some continuous function that can be constructed from given continuous functions. Okay, we all know identity function is a continuous function. We have seen that. So let us talk about inclusion function. Okay, what an inclusion function is and why this function is continuous. So here is a lemma. Okay, we have a topological space x tau be a topological space. We have a subset of x, and what we have is on A we have subspace topology. Okay, so tau A is the subspace topology. You all know what a subspace topology on a subset of x, correct? So this means a tau y, a tau A is another topology which is subspace topology. We define inclusion map I, let's say In, from A to X. Sometimes we denote it like this. Okay, this means inclusion map. How do we define? This is just an identity function. So In of X is X for all X in A. Okay. Why we are not saying this is identity? Because in identity function, domain and codomain are same. Here you have A as domain and the superset X as a codomain. Therefore, you cannot say identity, but you will say inclusion map. Call it inclusion map. Okay, this In is called inclusion map, and this is in fact a continuous function. In is continuous. How do you prove this? So to see a proof, okay, so proving this is very easy. Why? Because you know, okay, so can anyone tell me how should we proceed to prove this inclusion map is continuous? So we have seen some characterization of continuous functions. One of them is inverse image of any open set in the codomain is open in the domain. Okay, so take an arbitrary open set in X. Okay, take this means G in tau. Okay, so G is arbitrary open set. Is an arbitrarily open set in X. So what you see is its inverse image, inclusion inverse of G. What it will be? It will be actually this will be inverse of identity function. It will be G and intersect with A. Okay. So how? Let us see how. Okay. So what is In inverse G? By definition, this is all those points X in A such that I and X in G. Okay, is this correct? But you know, X is nothing but I and X is nothing but X in G. Okay, so we have two things: X in A and X in G. So whenever you have and, this is an intersection. Okay, whenever you have or, it means it is a union. So this is A intersection G. Okay, so from this
You see In inverse G is G intersection A. If you recall the topology, recall subspace topology. So what are all open sets on a subspace topology? On a subspace topology, tau A, this means this is all open set are of this form. Okay, so clearly G intersection A is of this form, and here G belongs to tau. This means G intersection A belongs to tau A, which means G intersection A is open in subspace topology on A. Okay. Is open in. So hence inclusion map is continuous. Okay. Next thing is restriction of continuous map. So suppose we have a continuous map F from X to Y, where X and Y are two topological spaces, okay, and F is continuous. So now what we have is we have a subset A of X, okay. If F is continuous, then this restriction map, we denote the restriction map by this notation F sub A, such that this is now the domain is A and it maps to Y. Codomain is Y. And how do we define this map? F sub A of X is Fx for all X in A. Okay. So this is the definition of restriction map. This is called a restriction map. So given this, we have this map defined like F sub Ax is same as Fx for all X in A. This is called restriction map, and it is in fact Fa is continuous if F is continuous. Okay, but this is again easy. Why? You have already. So when we talk about continuity, see, for define a function we only need two sets. So here, for defining this restriction map, we have only set. When we say this is continuous, we need a topology. Okay, topology on A. Here we will take subspace topology on A. Okay, so F restricted on A is continuous means we are taking subspace topology on the subset A. Okay, to see this is continuous is very easy because this F sub restriction A is nothing but F of inclusion. Okay, F of inclusion. This is composition of inclusion map and F. And you know, composition of continuous function is continuous. We have already seen this. We just proved. In is continuous. Okay, this is given that F is continuous because composition of two continuous map is continuous. This implies F restriction map is. Is this clear to everyone? Hello? हेलो यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या? सर वॉइस ब्रेक हो रही है इधर। हेलो अनुराग,
आपको आवाज आ रही मेरी? यस सर। सर मेरे यहाँ पे सर ब्रेक हो रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ आपका रही है। आपका नेटवर्क ठीक नहीं होगा। ओके, let us see about the characteristic function. So have you seen characteristic functions? Hello? Do you know what a characteristic function is? Okay, first define what a characteristic function is. Sometimes we call it identifier function. Okay? Characteristic or identifier. So suppose we have a topological space X a topological space, okay, and we have a subset A of X, the subset of X. Then a characteristic function chi, we define chi A from A to R. Okay, how do we define this? Wait a minute. Wait a minute, please. Okay, so how do we define this? Chi A is we define this function like chi A of X is 1 when X is in A, 0 when X not in A. Okay. Is this correct? So have you seen Dirichlet function? Yeah, I think Dirichlet function. Have you seen this function, Dirichlet function, in your BSc? Okay, let me tell you what this function is. You must have seen a counterexample of a bounded function which is not Riemann integrable. Do you remember this? Hello? Yes sir. What that example was? नो आइडिया सर। Huh? सर नहीं पता। अच्छा, okay, let me tell you that example. Okay, आपको ये example पता है? F from R to R fx equal to 0 when x is in when x not in Q and when 1 when x in Q. ये example याद है irrational और rational के लिए? जब x is irrational then 0, when x is rational then it's 1. The example
याद है? ये सर देखा है सर। देखा है? सर देखा है ये वाला, यस सर। हाँ, ये एग्जांपल है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ क्यू। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स क्यू। ओके, आप कहते थे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं पर भी कंटिन्यूअस नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एनीवेयर इन आर। ओके, ये वो रियल लाइन में कहीं भी नो वेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। ओके, लेट अस सी दैट। सो इस केस में जब यूजुअल, यहाँ पर ये यूजुअल टोपोलॉजी थी, इधर भी यूजुअल टोपोलॉजी थी, तो ये आप जानते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन तो ये क्योंकि आप जानते हैं ये कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है। पूछ सकते कि क्या कोई कंटिन्यूअस फंक्शन किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में कंटिन्यूअस हो भी सकता है? तो इसी के लिए एक रिजल्ट है लेमा। So a characteristic function as we defined above, okay, this function, characteristic function chi A is continuous if and only if A is a closed set. Closed क्या होता है? It is closed as well as open. Okay, it is both closed and open. Closed set. Subset of X. You know this Q is not open, not closed. Okay, so therefore characteristic function is not continuous by this lemma. Characteristic function of Q is not continuous on R because of this lemma. So let us see why when this A is Klopen subset, why the characteristic function is continuous. Let us see that. Okay, proof. So assume first that A is Klopen. Klopen means closed and open both. Okay. So A is Klopen. So to prove chi A is continuous, what will you do? You will take an arbitrary open set G in R in the, so let me make it here, back here. So what you will do, you will take an open set here G here, okay, G open, and what you do, you will check its open, so you will check its inverse image chi A inverse D, and you will see if it is open, then clearly chi A is continuous, otherwise it is not continuous. But we are saying it is continuous. This means we have to show that this set is open. So let us see this. Now writing it again, the definition of chi A, this is 0, this is 1. 0, 1, x is in A, sorry, x not in A, 1 when x is in A. Okay. So we have two cases. Case 1. You know G is here. If 0 is in G, okay, if 0 is in G, so open set containing 0, and 1 is also in G. It is something like this. So it is 0, this is 1. So something like this, minus 10 to 10, this interval. So what will be chi A inverse of G? In this case, can anyone tell me what will be the inverse image of G
under chi A. हाँ, हेलो, तो थोड़ा सोचिए, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 0 कब होगा, जब x a में नहीं है और यहाँ पर 0 भी है, 0 g में है, इसका मतलब x a में नहीं है, और 1 होगा जब x a में हो। तो कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, बताइए क्या होगा। मैं फिर से लिख रहा हूं आपको, काई ए बना के दे रहा हूं दोबारा से। काई ए, यहाँ पर a आपके पास था, ओके, और उससे बड़ा x था, ठीक है। वेट अ मिनट, थोड़ा गड़बड़ कर दी मैंने लिखने में, सॉरी। आई हैव रिटन इज रॉन्ग थिंग, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन सही लिखी, बट डोमेन को मुझे x लिखना चाहिए, बिकॉज अगर मैं डोमेन a ले रहा हूं तो उसमें x नॉट इन a वाले तो है ही नहीं ना, करेक्ट। I should write the domain is x, okay, and it is defined like this. Sorry for that. Here also chi a is, it is from x to r, okay. So can anyone tell me what will be chi a inverse g? Hello, Sir, X containing capital X. हाँ, तो आपने क्या बोला, x contained in, ओके, मैं फिर से, हाँ, x contained in कैपिटल X, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है, x वो सारे एलिमेंट भी आ रहे हैं जो a में नहीं है, और वो भी आ रहे हैं जो सारे a में हैं, ठीक है, क्योंकि g के पास दोनों एलिमेंट है, 0 भी है और 1 भी है, ओके। तो जो एलिमेंट a में है वो भी वहां पर है, और जो एलिमेंट a में नहीं है वो भी वहां पर है। तो a यूनियन a कंप्लीमेंट, ओके। सो काई इनवर्स g इज a, जब a होगा वो सारे के सारे कहां पर जाएंगे, 1 पे मैप करेंगे, यूनियन a कंप्लीमेंट। वो सारे एलिमेंट जो a में नहीं है वो 0 पर मैप करेंगे, क्योंकि g 0 को भी कंटेन करता है और 1 को भी कंटेन करता है। तो इसका इनवर्स इमेज a यूनियन a कंप्लीमेंट होगा, जो कि है x, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So this means you know x is open. In this case inverse image of open set is open. ये एक केस आया। दूसरा केस second, if 0 belong to G and 1 not belong to G, अभी 1 नहीं है लेकिन 0 है, तो यहां पर काई a इनवर्स G क्या होगा? X, sir, not containing A. हाँ हाँ, वो क्या हुआ? सर ये कॉम्प्लीमेंट हाँ, होगा। क्या होगा? अरे अभी सही, एक ने सही बताया, अभी कोई शायद मेरे ख्याल से ये किसकी आवाज है, साक्षी बोल रही है, भी नेहा ने बोला क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, आपने सही बोला, दोबारा से। सर 0 है अगर तो उसका X not containing A होगा, तभी उसका हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? इमेज X 0 not आएगा। contained, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? X not contained in A वाले को क्या कहते हैं? उस सेट को क्या कहते हैं? All those X in X A such that X complement, not sir. in A,
ए कॉम्प्लीमेंट, बहुत बढ़िया। और x माइनस ए दोनों सेम चीज है, ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्योंकि एक क्लोपन सेट था, क्लोज्ड भी था ओपन भी था, ठीक है, ए जो है क्लोपन सेट है, ए ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा, सो दिस इज ओपन। हमें ओपन चाहिए तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको ओपन ले लेते हैं, तो इस केस में भी ये ओपन है, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इज ओपन। थर्ड केस, जब अभी हमने जीरो को लिया है, अभी जीरो को नहीं लेते हैं और वन को ले लेते हैं इसमें, इस केस में काई ए इनवर्स जी क्या होगा बताइए? ए होगा सर। ए होगा। फिर से ये क्लोपन है, क्लोज्ड भी ओपन भी है, तो फिर हम इसे ओपन ले लेते हैं, ओपन ही नेक्स्ट, तो इसका मतलब यहाँ भी ओपन मिल रहा है भैया। फोर्थ केस है, अब बाकी और कौन सा केस बचा बताइए? हमने पहले में लिया था कि दोनों जीरो और वन वहां पर हो, फिर उन दोनों में से एक है एक नहीं है, और लास्ट वाला केस क्या है? दोनों ही नहीं है, जीरो भी नहीं है और वन भी नहीं, ठीक है। इस केस में काई ए इनवर्स जी क्या होगा? फाइव होगा, बहुत दिया, एम्प्टी सेट होगा ना, ना ए है, ना ए में है, ना ए कंप्लीमेंट में है, ना तो वो ए में है ना ही ए कंप्लीमेंट में, इसका मतलब वो एम्प्टी सेट है। तो ये जानते, ये आप जानते, ये हमेशा ओपन होता है। तो आपने देखा एक ओपन सेट लिया, आर्बिट्ररीली चूज किया, और वहां पर आपने देखा कि क्या है, वो तो आपको यहां से मिला ये कि सारे के सारे क्या आगे ओपन। ओपन आ गए, ठीक है। तो एक काम तो हमारा ये हो गया, ठीक। अभी कन्वर्स वाला पार्ट आपको इजी पड़ेगा, बताइए कन्वर्स कैसे करेंगे? हेलो, बताइए। तो आपको दिखाना है कि आपको मानना है कि एफ कंटिन्यूस है, और दिखाना है कि वो ए जो है वो क्लोपन है। ये करना तो इजी ही पड़ेगा, बताइए कैसे? सर अगर कंटिन्यूअस है तो एक बार क्लोज ले लेंगे तो उसका प्री इमेज क्लोज दिखा देंगे, और एक बार ओपन ले लेंगे और उसका प्री इमेज ओपन दिखा देंगे। तो क्या क्या क्या? सर हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का हम हाँ जानते हैं कि किसी भी जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसकी जो प्री इमेज होती है क्लोज की, एक बार क्लोज दिखा देंगे, और दूसरे हाँ केस में एक बार ओपन की ओपन दिखा देंगे, तो वो सेट हम बोल दें कि वो हाँ फंक्शन है। हाँ, तो ये होता है कि देखो, एफ आपने कंटिन्यूस लिया, एफ सॉरी काई ए जो है उसे आपने कंटिन्यूस माना, ओके, काई ए इज कंटिन्यूस। अभी ये जो वन है, वन इन आर, दिस इज क्लोज, ओके, द पॉइंट वन इन आर इज क्लोज, इज इट करेक्ट? क्लोज्ड इन आर होता नहीं होता बताओ? हेलो, ये सर सिंगलटन है तो। हाँ सिंगलटन सेट,
सिंगलटन सेट इसमें क्लोज होता है, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर में क्लोज होता है, क्योंकि काई ए इनवर्स क्या है, काई ए इनवर्स इज कंटिन्यूअस, इट्स इनवर्स इज क्लोज। अभी इसका इनवर्स क्या है, ए है, ओके, दिस इज क्लोज, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. ओके, अभी ओपन क्यों होगा ये बताइए, ओपन क्यों होगा बताइए? ओके, ओपन इसलिए होगा, दिस इज ओपन बिकॉज ये जानते हैं आर माइनस जीरो, व्हाट काइंड ऑफ सेट इज दिस इन आर, यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ आर, ये कैसा सेट है? सर ओपन है। ये क्या है, Sir, ओपन है ना? open है, yes, sir. ओपन Yes, sir. यस सर। ओपन है। अभी इसका काई ए इनवर्स आर माइनस जीरो, ये क्या होगा बताइए? अब जानते हैं आप ये, यहां पर अभी हमने देखा था वो सेट जो जिसमें जीरो नहीं है, लेकिन सॉरी ये मैंने क्या लिया, इसमें जीरो है लेकिन वन है, ओके, तो इसका इनवर्स इमेज ए आया, ओके, यहां से ये क्या आया, ओपन आ गया। सो एक बार क्लोज आ रहा है, एक बार ओपन आ रहा है, ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज, ओके, इज दिस करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस सर। है ना? सो देयरफॉर ए इज क्लोपन सेट, ओके, ठीक है कि नहीं है बताइए? यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट थिंग, तो नाउ एक और चीज देखते हैं, सपोज we have a topological space X, okay, and we can write X as union of open sets, okay, U alpha, ऐसा हम हमेशा लिख सकते हैं। टोपोलॉजी के सारे, टोपोलॉजी में जितने भी क्या है, जितने भी ओपन सेट्स हैं उनका यूनियन हमेशा X होता है, तो हम यूनियन ऑफ ओपन सेट्स को के फॉर्म में X को लिख सकते हैं, okay? Suppose X is union of U alpha and we have a function f from X to Y. Y be any topological space. Okay? So this be a function. And what kind of function is this? Let f be a function such that, अभी आपको मैंने रिस्ट्रिक्शन वाला फंक्शन बताया था, याद है आपको? जब भी मैं इस f को किसी एक u अल्फा में रिस्ट्रिक्ट करता हूं तो ये कंटिन्यूअस होता है। f इज, this restriction function is continuous. I am not saying that f is continuous, I am just saying that the restriction of f on the subset u alpha is continuous, and this is true for each alpha. Then this function, this f from x to y is continuous. Okay, तो आपको एक फंक्शन है जो हर एक ओपन सेट में कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है? x के बारे में हम नहीं जानते कि वो x में कंटिन्यूअस है या नहीं है, बाकी सभी ओपन सेट्स में वो कंटिन्यूअस है जिनका यूनियन पूरा पूरा x आता है, देन f इज कंटिन्यूअस। ओके, लेट्स सी ए सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। किसी को भी नहीं आ रही मेरी वॉइस? हेलो हेलो, आ रही है सर। यस सर। सर आ आ रही रही। है, ओके। सो
from the hypothesis what we have is this. Okay, so X can be written as union of open sets and f of u alpha is continuous. So we have to prove f is continuous. For this, what we do, we will take an arbitrary open set in Y. We will prove that its inverse image under F is open. This is what we will do. So choose an arbitrary open set V in Y, open, okay. Consider this. This is an arbitrary open set. Then what will be F inverse V? F inverse V. Okay. So first let us see what is F inverse V intersection U alpha. What is this? This is all those X in U alpha such that Fx belongs to V. Okay. Hello. Is this correct? Is this correct? Yes, sir. हाँ, ये तो F inverse V का क्या मतलब है? Fx in V and intersection U alpha means X in U alpha. Okay. So this is the definition of F inverse V intersection U alpha. And this is same thing of this. Okay. This is nothing but inverse image of V under the restriction map. Okay. This is same as this. But you know this map is continuous. Therefore, F restriction U alpha inverse V is open. Open where? Open in its domain. इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या था? रिस्ट्रिक्शन का ध्यान दो. इसका डोमेन था, अच्छा मैंने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आपको याद होना चाहिए क्योंकि पहले हमने किया है, तो ये आपको याद होना चाहिए था. इसका डोमेन था यू अल्फा. ओके, इन यू अल्फा. ओके, वी हैव सीन अ थ्योरम. मैं फिर से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. एक थ्योरम हमने देखी थी, एक्स ए यू. ओके, ऐसे. So A is a subspace of X. So suppose A is an open subset of X and open subspace of X. Okay, and U is open in A. U is open in A, and A is open in X. Then this U is open in X. So from here, this F inverse, inverse image of V under this map is open in U alpha, and because U alpha is open in X, because U alpha is open in X, what we get is F restriction U alpha inverse V is open in X. Okay, अभी हमारे पास ये open आ गया. What is now? What will be F inverse of V? This will be union of all these sets. Okay, हमने जितने भी पॉसिबल यू अल्फाज हो सकते हैं, जो भी हैं, उन सबका इनवर्स इमेज ले लिया, उसका यूनियन कर दिया, तो वो मिलेगा हमें एफ इनवर्स वी. एंड यू नो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इन एक्स इज ओपन इन एक्स. So this is an arbitrary union of open sets in X. Therefore, this set is open. This is open because arbitrary union of open sets is open. Okay, and you are done because you have proven that inverse image of an open set is open. Okay, is this clear? I hope it is clear.
नेक्स्ट थिंग इज, तो आप लोग कहते थे ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पर। यहाँ पर उसे कहते हैं पेस्टिंग लेमा। ओके, दिस इज कॉल्ड पेस्टिंग लेमा। What a pasting lemma is? Let x equal to A union B, where A and B are closed subsets of X. A and B are closed in X. Okay. Let f is a function from A to Y, and g is a function from B to Y. Okay, we have two functions, and these are continuous functions. Now, if fx equal to gx for all x in A intersection B, okay, then f and g combine to give a continuous function. What does this mean? This means we have a function h from x to y. How do we define this function? We define this function like this: hx is fx whenever x in A. Okay, this is in gx whenever x in B. So on the intersection of A and B, both f and g are same. Okay, on the intersection both f and g are same. Okay, so for example, so before proving this, let us see an example of this. Okay, so I think you may read, you can read this thing. Okay, so let us see an example for pasting lemma. Okay, so suppose we have a function from 0 pi to r. Okay, so this is closed interval. So here x is 0 comma pi by 2, and take a equal to 0 comma pi by 4, b equal to pi by 4 comma pi by 2. Okay, so a union b is x. This is x. So you can clearly see x is a union b. And what is a intersection b? What is a intersection b? Hello? Hello? So pi by 4. Pi by 4. Pi by 4 is the A intersection B. So if we define a function, okay, जो मैंने लिखा है यहाँ पर उसी हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने h दिया है। ओके, we define f from A to R by fx equal to sin x. Define g from B to R. Okay, gx equal to cos x. अरे क्या हो रहा है? Gx equal to cos x. Then define h from 0 to pi by 2 to r. Okay, hx equal to, so fx was sin x, x in 0 to pi by 4, cos x, x in pi by 4 to pi by 2. Okay, so to say this function is continuous, you will need this pasting lemma. Okay, x
0 से π/2 वाला इंटरवल है, a और b आपको मालूम है क्या है. You all know f and g both are continuous function on their respective domains. You know this from your real analysis course. So to say this h, this new function h is continuous, to show this, what you have to prove is f(x) equal to gx for all x in a intersection b. What is fx? This is sin x. What is gx? This is cos x. For all x in a intersection b means, what is a intersection b? Someone said π/4. Okay, this is true. In fact, sin π/4 is the same as cos π/4, which is nothing but 1/√2. Okay, Yes, sir. therefore Yes. therefore this Yes, sir. h is this h is continuous. Okay, so this is an example of pasting lemma, application of pasting lemma. Okay, so here is one more example. Say h from R to R. Okay, so I'm just writing hx as x for all x less than equal to 0, and x/2 for x less than 0, x/2 for x greater than equal to 0. So both are closed sets in R. So is this function continuous? Is this function continuous? Answer is yes, because on the, what is intersection? Intersection is the point 0. Okay, this set 0, a singleton 0. So ये fx है, ये gx है. 0 पॉइंट पर दोनों 0 वैल्यू देते हैं. ठीक है. Yes, sir. Hello. Okay, here is another example which is not, let us see a non-example which is not a continuous function. Define h from R to R. hx equal to x minus 2, x plus 2 for x less than equal to 0, for x greater than equal to 0. Is this function continuous? So what about 0? So this was fx, this was gx. Okay, what is g0? This is 2. What is 0? This is minus 2. Okay, so this means these two are not equal. So therefore this h is not continuous. This is not continuous. Okay, is this correct to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So let us see a proof. Proof is very easy. So let me show you the pasting lemma, then we will prove it. Okay, this is pasting lemma. Recall this, I am saying it again. So we have a topological space which can be written as a union of two closed sets A and B. We have two continuous functions. So first is f, whose domain is A, codomain is y. Another function is g, whose domain is B, codomain is y. These two functions are continuous, and these are continuous with the property that they agree on the intersection. Agree on the intersection means fx equal to gx for all x in A intersection B. Then the new function h, which is defined like this, is continuous. Okay, so let us prove why this function is continuous. You know, you have seen proofs of several results. So now we will do this by, you know that a function is continuous if and only if inverse image of open set is open. And you have already seen another thing is also true, that inverse image of closed set is closed. So let us try
with closed set. Okay, so let us take C a closed set in Y. Okay, closed set in Y. Our claim is H inverse C is open. Sorry, is closed. Where in X. Okay. So what is H inverse C? H inverse C is, okay, let us see what is H. H कैसा था? Hx equal to fx gx x in A, x in B. Okay, so H inverse C will be all those x in X such that Hx in C. What does this mean? This means x in X. अब ये Hx क्या है? ये तो या तो fx है या gx है. तो इसका मतलब either fx in C or gx in C. Okay, correct? Because hx is given by fx and gx. So इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से. So this means, so x in X such that fx in C or x in X such that gx in C. So the first one is f inverse of C. Second one is g inverse of C. Both f and C are continuous functions. Therefore, this is closed in A. This is closed in B. You know, and you have already given that what is given? Given that A and B both are closed in X. And you know a result says, okay, so f inverse C is closed in A is closed in X. This is closed here, this is closed here. This implies f inverse C is closed in X. Similarly, G inverse C is closed in B and B is closed in X. Therefore, G inverse C is closed in X. And you know finite union of closed set is closed. Okay? So, therefore, H inverse C, which was nothing but F inverse C union G inverse C, is closed in X. And our claim is accomplished. Okay? Is there any problem with the proof of any result? Okay, if there is no problem, then I will define another notion that is called locally constant function. Okay, locally constant function. So let X and Y be two topological space. F from X to Y be a function. Okay, we say F is locally constant if, so see this thing, if for every element of capital X there is an open set. You may say there is an open neighborhood also. Okay, there is an open set containing X. The another word is open neighborhood of X. Such that f of u is a constant. F of u is constant means f of u is a singleton set. Okay, f of u is a singleton set. Singleton set. Okay, so f of u, so आप जानते हैं कि
कांस्टेंट फंक्शन का क्या है, कांस्टेंट फंक्शन का जो रेंज होता है वो सिंगलटन होता है, ठीक है, एक ही होता है। यहाँ पर लोकली कांस्टेंट कर रहे हैं तो हम वो पैचेज में, अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल एक देख लेते हैं इसका, तो हम आर में देखते हैं एक एग्जांपल। ओके, तो एफ फ्रॉम आर टू आर, आपने ऐसे फंक्शन डिफाइन करिए लाइक दिस, ऐसे। ओके, दो तरह का मैं बना रहा हूँ, मैं आर में नहीं चलता हूँ, मैं एक एक दूसरा छोटा सेट लेता हूँ। आर में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। टेक एक्स इक्वल टू से ओपन इंटरवल 0 1 यूनियन 1 2 यूनियन 2 3, इतना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं और डिफाइन करते हैं y इज r। तो डिफाइन फंक्शन f फ्रॉम x to y, f of x equal to say 0 when x here, okay, define it 1 when this is here, define it 2 when this is here, okay। तो आपने ऐसे डिफाइन किया, तो आपने लिया था ये इंटरवल 0 1 देन 1 2 देन 2 3, ये लिया था। और ये फंक्शन क्या है, इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो आप इसको प्लॉट करेंगे तो आप, ये इस पार्ट में 0 था, इस पार्ट में 1 था, इस पार्ट में 2 था। ओके, सो this is a locally constant function, this is not constant but a locally constant function। constant function के लिए इमेज में केवल सिंगलटन सेट होता है। यहाँ पर आपको मालूम है ये सिंगलटन सेट नहीं है इमेज में, इमेज क्या है 0 1 2, this is image of f, okay, image of f is, therefore this is not constant but it is locally constant function। so here is a lemma, every locally constant function is continuous। so this means this function is continuous function, okay, this function is continuous। अब आप कहेंगे कि ये continuous तो नहीं दिख रहा, उसके लिए देखिए, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने इक्वलिटी कहीं यूज ही नहीं किया, यहाँ पर अगर मैं इक्वलिटी कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए वो पहले से ओमिट है, ध्यान रखिए इसको। तो ये इसको, और आपका वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है या कौन सा होता है, सीलिंग फंक्शन या फ्लोर फंक्शन, जो भी जिससे भी आप कहते हैं, उससे कंपेयर कीजिए। फ्लोर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूस है, क्यों ऐसा है इसके बारे में सोचिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, एक्सरसाइज। और ये ऐसा, इसका प्रूफ मैं पहले दे चुका हूं, कहां पर, यहां पर, ये जो हमने थ्योरम करी है यहाँ पर इसका प्रूफ आपको मिल गया है। कहाँ गया ये, एक जगह आपको याद है हमने x इक्वल टू यूनियन ऑफ अल्फा करा था, यूनियन ऑफ अल्फा। ओके, so here I have given you proof of this locally constant function। so you know every constant function is continuous, locally constant function is continuous on each u alpha, and you can write x in this form, and using this lemma you are done। so I leave this as an exercise for you, so please complete its proof and compare this result
with floor function or greatest integer function or ceiling function. Okay, so why those functions are not continuous and this function is continuous? Okay, so please compare this. Tomorrow onwards we will be discussing on another notion that is called homeomorphism. Okay, so I'll stop here. If you have any question, please ask. कोई क्वेश्चन है किसी का? Okay, if you don't have any question, then I'll stop sharing the screen and I'll leave the meeting. Okay, I'll end this meeting. किसी ने कुछ तो लिखा है? हाँ, sorry, one second. Okay, then drop your attendance.